Students, today we will start next topic, moments of the distribution. moments find करनियां ने। सब तो पहला तुहाडे कोल आऊगा इत्थे रा मोमेंट्स। रा मोमेंट्स या असीं इहनूं भी बोल दिंदे आ कि मोमेंट्स अबाउट आरबिट्रेरी पॉइंट ए। मोमेंट्स अबाउट आरबिट्रेरी पॉइंट्स। Now first of all, the rth moment about point A, which is denoted by mu r dash, जिन्हों से mu r dash नाल डिनोट करते हैं, and which is equal to expectation of x minus a to the power r। a कोई भी पॉइंट हो सकता, 1 2 3 1/2 एंड सो ऑन 0। सो अगर असी स्पैशली a नू 0 कंसिडर कर लीए, दैन इट विल बिकम म्यू आर डैश, जिन्हों असी 0 मोमेंट्स भी कह दें। इफ वी विल टेक a इज इक्वल टू 0, if we will take a 0, then this will become 0 moments. So therefore mu r dash is equal to expectation of x to the power r, means mu 1 dash is equal to expectation of x to the power 1, means expectation of x. mu 2 dash is equal to expectation of x square. mu 3 dash is equal to expectation of x cube. mu 4 is equal to mu 4 dash expectation of x to the power 4 and so on। ये तो साडे कोल सी रा मोमेंट्स। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट आरथ मोमेंट अबाउट मीन, जिन्हों असी सेंट्रल मोमेंट्स भी बोल देने। मोमेंट्स अबाउट मीन, अबाउट अर्थमेटिक मीन। मोमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन म्यू, which is denoted by mu r is equal to rth moment, rth central moment about mean, expectation of x minus mu to the power r। So mu 1 is equal to expectation of x minus mu, सो अगर असी एक्सपैक्टेशन की प्रॉपर्टी लगाइए, एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ म्यू, एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स म्यू बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टेंट, एक्सपैक्टेशन ऑफ म्यू इज म्यू, एंड म्यू नू जिद्दां कि असी पहला भी किया सी एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स नाल डिनोट करते हैं, देयरफॉर दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो म्यू 1 हमेशा तुहाडे कोल की आएगा 0। सो म्यू 2 की गल करिए, म्यू 2 इज इक्वल टू एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। सो म्यू 2, वैल्यू ऑफ म्यू 2 विल बी give us the value of variance। सो इथों साडे कोल की आएगा वेरियंस। सिमिलरली म्यू 3, expectation of x minus mu whole cube, mu 4 expectation of x minus mu to the power 4 and so on। So in this way we can find zero moments or moment about any point. This is the here we take a is equal to 0
So these are raw moments about 0. These are central moments. Now we will discuss an important relation between raw moments and central moment. That is mu2 dash or mu2. This is the relation between the raw moments and central moment. Mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square. Now ये relation कित्थे काम आंदा? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ क्वेश्चन ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ μ1 ਡੈਸ਼ μ2 ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰੋ μ2 ਡੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਆਫਟਰ that, using this formula we can find central moments. Now mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash cube. mu4 is equal to mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash square minus 3 mu1 dash to the power 4 mu1 dash to the power 4 means सब तो पहला सी अगर mu1 dash mu2 dash mu3 dash mu4 dash फाइंड कर लिया, then we can find central moments mu2 mu3 mu4। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ we will discuss in tomorrow's lecture, but ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Now question is find the first 4 moments about origin। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 moments about origin find ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, means mu1 dash mu2 dash mu3 dash mu4 dash। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ find ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ moments about mean, means mu1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ already always equal to 0, mu2 mu3 mu4। okay, now first of all we will find the zero moments or moments about origin। now for that mu1 dash is equal to expectation of x, so 0 to 3, because x is continuous random variable, we will integrate x into fx from 0 to 3। now 0 to 3 x into value of fx is 4x 9 over x square divided by 81। now 4 over 81 integral of 9x square
माइनस एक्स टू द पावर 4। सो इंटीग्रेशन कितनी है साढ़े को बन गया 9x³ ओवर 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 ओवर 5 0 to 3। सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने तो बाद वी विल गेट 8 over 5। So this is the expectation of x. We can say this is arithmetic mean. Mu1 dash, value of mu1 dash will always gives us arithmetic mean. Now mu2 dash, which is equal to expectation of x square 0 to 3 x square fx. So 0 to 3 x square 4x 9 minus x square over 81 dx. So taking 4 over 81 common, 0 to 3 9 x³ minus x to the power 5 dx. So 4 over 81 9x to the power 4 by 4 minus x to the power 6 over 6 0 to 3. Now after simplifying it we will get mu2 dash is equal to 3. Now mu3 dash, expectation of x³ 0 to 3 x³ fx dx, which is equal to 0 to 3 x³ 4x 9 minus x square divided by 81 dx. So 4 over 81 0 to 3 9x to the power 4 minus x to the power 6 dx. So 4 over 81 9x to the power 5 over 5 minus x to the power 7 over 7. So after the simplification we will get 216 over 35. Now mu4 dash, अब अगर असी mu4 dash की गल करिए तो mu4 dash expectation of x to the power 4, so which is equal to 0 to 3 expectation of integral of x to the power 4 into fx dx. So 0 to 3 x to the power 4 4x over 81 9x 9 minus x square dx. 0 to 3 take 4 over 81 common, 9x to the power 5 minus x to the power 7 dx. So 4 over 81 9x to the power 6 over 6 minus x to the power 8 over 8 0 to 3, which is equal to, after simplification we will get 27 over 2. Now these are the zero moments. Now second question is we have to find the center moments. First of all mu1, which I already explained कि mu1 always equal to 0, so mu1 is equal to 0. Mu2, which always will give us the variance, so mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square 3 minus 8 over 5 whole square, which is equal to 11 over 25. Now mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash cube. So this is 216 over 35 minus 3 into 3 into 8 over 5 plus 2 into 8 over 5 cube. So which is equal to negative of 32 divided by 875.
Now mu 4 dash minus 4 mu 3 dash mu 1 dash 6 mu 2 dash mu 1 dash square minus 3 mu 1 dash to the power 4. So 27 over 2 minus 4 into 2 16 over 35 8 over 5 plus 6 into 3 into 8 over 5 whole square minus 3 into 8 over 5 to the power 4. So this is equal to 3693 divided by 8750. सो क्वेश्चन साढ़े को सिंपल सी कि सब तो पहला असी जीरो मोमेंट्स फाइंड करनी है सी आफ्टर दैट सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट मीन तो सब तो पहला असी म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश फाइंड किया नाउ यूजिंग दीज फार्मूलाज म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 आफ्टर यूजिंग दीज फार्मूलाज we get the value of mu 2 mu 3 mu 4. सो ये क्वेश्चन तुसी इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करने ने ते नेक्स्ट वीडियो मैं कल सेंड करांगा। थैंक यू बेटा।